Fellow Royal College of Physicians, Edinburgh and London respectively, and Fellow American Association for Study of the Liver. Professor Dhiman was instrumental in starting the liver intensive care unit facility, liver transplantation program, and a new super specialty course in hepatology for the first time in the country in PGI MER Chandigarh. Sir, we welcome you to our university and are honored for your grateful welcome. On behalf of CSJM University, I would like to welcome both of you and would like to invite you onto the dais to chair this session on national education policy and healthcare profession. Thank you, madam. May I now invite Professor Kuldeep Singh for delivering his talk. Honorable Chairman, Professor Akademi, all the deputies, all the vice chancellors of the medical university and centers and the faculty members. This is my proud privilege to be invited for this very important aspect of the national education policy, which is related to the healthcare professionals. So, I come from All India Institute of Medical Sciences, Jodhpur, and Jodhpur is in the center of Rajasthan. It is one of the 6 aims which was created by the Minister of Health and Family Welfare under the AIMS Amendment Act. And I'll be talking about the national education policy as it relates to the healthcare professionals. So, basically, when we talk about education, education is a very broad term which means the desired positive behavioral changes among the person. When we talk about the education and we go back to the education, the earlier were the literacy. It is the literacy that you can know your name, you can write your name and sign the letters. But the education is another step. But one of the important component of the education is not only the literacy and the knowledge, but it is the positive behavioral change which can change the society for the betterment. And that is the reason that there is a need for considering a policy. And policy should not be like it is revolution, but should be evolution. And we have a lot of discussion in the morning about the national education policy, what are the challenges, and how we can overcome those challenges. So our mindset is usually fixed in some of the areas, and that is because of our intelligence, and the talent is fixed at the birth is our concept. But when we talk about the education, our mindset should be in a growth phase. I think it should be nurturing. It is growing, it is harboring, branching out, connecting with other, networking, and also producing some positive impact on the society. So this is the main emphasis of the education. And considering the education as a process which is a long-term impact. It also takes a long time to understand the real education policy. So this initial education policy uh, was given to the country in 2020 July, but there was a lot of deliberations which had occurred under the chairmanship of Dr. Kasturi Rangan, and he has elaborated with all the group of experts to develop this policy, and it was given to the society in 2020. So, what is the history of this educational reformation? So, first national education policy was formed in 1968. It was quite long back, and then it was modified in 1992. After that, there was no change in the education, and this 2020 is the recent national education policy, which has been considered to be although revolutionary, but the impacts will take some time to develop. So the main aim of this policy is it is aligned with the
This is aligned with the this is aligned with the Sustainable Development Goal 2020, 2030. And this it aims at transforming the school and the higher education into holistic, flexible, multidisciplinary, suitable to develop the individual qualities of the each student. And we also talk about the flexibility, that it should be flexible enough that the students can be brought back to the schools. So, when we talk about education, this is a previous academic structure, which is which start at the age of 2 years, at the age of 3 years with the Anandwadi, and then there is a 2 years of preschool education of class 1 and 2. Then there is a age from 11 to 8 to 11, class 3 to 5, which is a preparatory phase, and then the middle school, that is from class 6 to 8, which comprise of 11 to 14 years, and then the secondary school from 9 to 12 years, 9 to 12 class between age 14 to 18. So this was a new pedagogical curriculum which is based on the foundation, and it encompasses many aspects of the educations which are starting from the foundation at the time of in the first 5 years of the life. And this is started with the home education as well as the education in the Anganwadi centers. So this second point of this education point policy was that ensuring the universal access at all levels of the school education, early childhood care and education, with a new curricular pedagogical structure which involves multiple ministries: Ministry of Education, Ministry of Health and Family Welfare, Ministry of Tribal Affairs, and Ministry of Women and Child. The most important aspect of this is the attaining the foundational literacy and the numeracy. And reforms in the curriculum and the pedagogy start from the sixth grade. So ये जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था कि हेल्थ से रिलेटेड इसमें क्या चेंजेस हैं और इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे और क्या हमारे पास चैलेंजेस है उसको ओवरकम कैसे करेंगे। एंड इसका एक हमारा है कि हम इसका जो भाषा है वो लोकल लैंग्वेज को अडॉप्ट करें। लोकल लैंग्वेज की पावर हमारे अंडरस्टैंडिंग में ज़्यादा होती है, हम ज़्यादा अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं दूसरे किसी को परेशानी को, और प्रॉब्लम को सॉल्व करने का भी हमारे सॉल्यूशंस डेवलप होने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसमें एक और भी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट था कि हम जो अपना असेसमेंट सिस्टम है, इवैल्यूएशन और एग्जाम सिस्टम है, इसको भी कैसे हम चेंज करें। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण जो परिवर्तन ये किया गया कि हम एग्जाम को केवल समेटिव एग्जाम ना माने, हम इसको फॉर्मेटिव कंटिन्यूअस असेसमेंट माने। कंटिन्यूअस असेसमेंट है कि बच्चे का जब वो स्कूल में एंट्री करता है आंगनवाड़ी से, वहाँ पे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट करके उसको फीडबैक देते जाएं और उसकी जो गलतियां हैं, उसकी कमजोरियों को पता लगा के उसको इम्प्रूव करते जाएं। एंड इसका बेसिकली उसका एनालिसिस के ऊपर, क्रिटिकल थिंकिंग, हायर ऑर्डर थिंकिंग के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस हो। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैसे उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके लर्न किया जा सकता है, इसके ऊपर एम्फेसिस की। इसका एक और महत्वपूर्ण ये भी पहलू है कि हम एजुकेशन को इंक्लूसिव बनाएं, कि जो बच्चे डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी से आ रहे हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं, डिफरेंट लैंग्वेज सिस्टम से आ रहे हैं, उनको भी हम इंक्लूड करें। जो वीकर सेक्शन है, वीकर बच्चे हैं, उनको भी हम इंक्लूड करें एजुकेशन में, सो दैट अल्टीमेटली नो चाइल्ड इज लेफ्ट बिहाइंड। एक और भी इसका महत्वपूर्ण पार्ट था कि हम रोबस्ट टीचर रिक्रूटमेंट एंड कैरियर पाथ भी डेवलप करें, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम कैपेसिटी डेवलपमेंट फॉर द टीचर्स एंड फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस करें, और इसमें बहुत गहन चिंतन और मंथन की जरूरत है कि हम कैसे इसको रिफॉर्म कर सकते हैं, एक हम टीचर्स की एजुकेशन को, कैपेसिटी को कैसे डेवलप कर सकते हैं। एक और भी चीज है कि स्कूल गवर्नेंस,
जो हम ऑर्गेनाइज करते हैं एज कॉम्प्लेक्सेस और क्लस्टर्स, उनके ऊपर स्ट्रेस हो। साथ ही साथ हम न केवल अपने क्षेत्र में बट अपने प्रदेश में और नेशनल लेवल पे भी एक्रेडिटेशन के लिए कोशिश करें, और न केवल हम केवल देश में बल्कि विदेश के लिए इसकी छाप छोड़ें, और उसके द्वारा जो एक्रेडिट सिस्टम है उसके हम कंपैरेटिव में चले जाएं। अब इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है वो हायर एजुकेशन है कि हायर एजुकेशन का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कैसे रोल है। और ये देखा गया था कि जो अभी तक 2018 का फिगर था कि हमारा जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन द हायर एजुकेशन इज ओनली 26.3%, और इसको इस पॉलिसी के जरिए 2035 तक एटलीस्ट 50% तक ले जाने की कोशिश की जाए। तो जो बच्चे 12वीं तक पढ़े हैं उनको भी हायर एजुकेशन में किसी न किसी फॉर्म में हम लाएं, और इसके लिए हमें हॉलिस्टिक मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, अभी इस मॉर्निंग में इसके बारे में काफी जिक्र हुआ था, काफी डिस्कशन भी हुआ था कि हम कैसे इसको कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम जो क्रेडिट पॉइंट्स हैं, क्रेडिट एक्वायर करते हैं, उसका बैंक की तरह एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की तरह हमारे पास इसका एक्यूमुलेशन हो, और वो बच्चे को विदित हो कि उसके पास कितने क्रेडिट्स एक्यूमुलेट किए किस पार्टिकुलर कोर्स के। इसके ऊपर भी मॉर्निंग में डिस्कशन हुआ था, चैलेंजेस भी हमने सुने। लेकिन ऐसा है कि कोई भी चैलेंज है उसको ओवरकम कर सकते हैं अगर हमारे पास विल है। और साथ ही साथ इन सब के साथ हमें जो मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट भी आया है। तो ये जो यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स होंगे एक ही जगह पे, और जो एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज के साथ इसको चेंज करके हम इसको ऐसे लाएंगे कि ये हायर एजुकेशन के एक स्टैंडअलोन बन जाए, और दे आर एट पार विद द इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। साथ ही साथ एक ये देखा गया कि जो हमारे एजुकेशन में अभी भी बहुत सारे हायर एजुकेशन में रिसर्च की तरफ फोकस कम था, और इसको भी एक पार्ट दिया गया एजुकेशन पॉलिसी में कि हम रिसर्च को डेवलप करें, और इस रिसर्च को डेवलप करने के लिए एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एंड फ्रेमवर्क की कोशिश की गई, और इसको डेवलप करके अभी रिसेंटली 28 जून 2023 को इस बिल को पास कर दिया पार्लियामेंट। इसका मतलब ये है कि हम जो रिसर्च और शोध करते हैं उसके लिए अब एक नया सिस्टम डेवलप होगा, और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने शोध करने के लिए। साथ ही साथ रिसर्च के लिए ग्रांट्स का भी जो फ्लो अभी तक डिसरप्टेड था, ठीक से नहीं ग्रांट आ पाती थी, वो फैसिलिटेट हो जाएगी। और इसको करने के लिए सरकार ने, हम लोगों ने कोशिश ये की है कि 50,000 इसका टोटल 50,000 करोड़ टोटल बजट रखा है, जिसमें कि मेजर पोर्शन प्राइवेट इंडस्ट्री से आएगा, और जो SERB था उसको मर्ज करके इसके अंदर ले आएंगे, और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विल बी द ओवरआर्चिंग area where they will work on the research in different areas. So the grants will be facilitated, शोध करने का सबको मौका मिलेगा, और ये हायर एजुकेशन को नए आयाम पे ले जाने की एक पहल है। साथ ही साथ जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो बहुत सारे सिस्टम हमें पैरेलल में लाने पड़ते हैं, हमें एक दूसरे को एक सेम प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश करनी होगी। इसके लिए रेगुलेशन बहुत जरूरी है, और ये रेगुलेशंस के लिए उन्होंने हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया है। ये एक सिंगल एक ओवरआर्चिंग अम्ब्रेला बॉडी होगी जिसके अंदर में बहुत सारे और सब कमिटीज और सब कमीशंस होंगे। लेकिन इस सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया में मेडिकल एजुकेशन और लीगल एजुकेशन को अलग रखा गया, और इसका कारण यही है कि जो मेडिकल एजुकेशन और लीगल एजुकेशन एक अलग तरह की प्रोफेशनल कोर्स होते हैं जो हमारे डायरेक्टली समाज से प्रेरित होते हैं और समाज के ऊपर इम्पैक्ट भी करते हैं। हायर एजुकेशन में और भी उन्होंने ये किया कि रैशनलाइज्ड इंस्टीट्यूशन आर्किटेक्चर, जैसे 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 कॉलेजेस हैं उनके रिसोर्स बढ़ेंगे, उनकी फैसिलिटी बढ़ेगी, वाइब्रेंट मल्टी डिसिप्लिनरी डेवलप इंस्टीट्यूशन की तरह डेवलप करेंगे, तो उनको अपग्रेड करके एक हायर इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी लेवल पे ले आ सकते हैं। तो हर एक इंस्टीट्यूशन के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो स्टैंड अलोन मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट बन सकता है। मोटिवेटेड, एनर्जाइज्ड एंड कैपेबल फैकल्टीज की बहुत जरूरत है, बिकॉज फैकल्टी अगर जब तक नहीं समझता है तब तक हम इम्पैक्ट नहीं ला सकते।
और वो करिकुलम चेंज होगा, इनोवेशंस होगा, उसमें क्या चेंजेस करता है उसके ऊपर इंसेंटिव्स भी दिए जाएं। टीचर एजुकेशन ना केवल प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, यूनिवर्सिटी स्कूल के लिए इम्पोर्टेंट है, बट ये हर एक प्रोफेशनल कोर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। जब हम स्कूल की बात करते हैं तो स्कूल एजुकेशन में बीएड, एमएड करके आप टीचर क्वालिफिकेशन एक्वायर कर सकते हो, लेकिन प्रोफेशनल कोर्स में ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चैलेंज है। वहाँ पे कोई ऐसा डिग्री नहीं होती जिसको आप रिकॉग्नाइज करके कह सको कि आप सर्टिफाइड टीचर हो। और यहाँ पे हमें हैंड होल्डिंग की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, कैपेसिटी बिल्डिंग की, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम की बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि ये जो कोर्स होते हैं, प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, इनमें टोटली डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, इनके थिंकिंग डिफरेंट होती है, इनको इनोवेशंस की तरफ, रिसर्च की तरफ और इम्पैक्ट इन द सोसाइटी की तरफ प्रेरित करना पड़ता है। तो ये टीचर एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। साथ ही साथ मेंटरिंग मिशन, दैट इज द सीनियर और रिटायर्ड फैकल्टी को भी यूटिलाइज किया जाए कि वो मेंटर कर सके जूनियर फैकल्टी मेंबर्स को। एंड अभी जो कॉन्सेप्ट हम टीचर्स के ऊपर करते हैं, पहले हम लोग स्कूल टीचर्स की बात करते थे, फिर लेक्चर प्रोफेसर्स की बात करते हैं, एंड आज मॉर्निंग में ये भी डिस्कशन हुआ कि कोचिंग क्लासेस भी बढ़ रहे हैं, सो दैट कोचिंग वाले टीचर्स भी होते हैं, कोचिंग वाले फैकल्टी भी होते हैं, फैसिलिटेटर भी होते हैं। लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट जो अब आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ए मेंटरशिप प्रोग्राम। मेंटरशिप प्रोग्राम एक ऐसा है जिसमें कि आप भले एक्सपर्ट ना हो उस एरिया में, बट यू कैन गाइड द जूनियर फैकल्टी मेंबर्स फॉर द राइट डायरेक्शन। उसके क्या खास बात है, किस चीज की कमी है, दैट यू कैन गाइड देम, एंड दैट इज अ मेंटरशिप प्रोग्राम। सो वी आर मूविंग टू अ स्टेज above from the teacher to the mentor, and we now know the COVID has taught us many things। हम कोविड में जान गए कि हम कैसे टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं, किस तरह से एडवांसमेंट 2 साल के अंदर हमारा इतना ज्यादा बायोटेक्नोलॉजी में, मेडिकल टेक्नोलॉजी में और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, इवन कंप्यूटर साइंस में इतना ज्यादा विकास हुआ है कि अब उस टेक्नोलॉजी को हम अपना स्लेव बना सकते हैं। हम टेक्नोलॉजी के स्लेव ना हो, बट अपनी टेक्नोलॉजी को हम यूज कर पाए अपने स्टूडेंट्स तक और कम्युनिटी तक और अपने पूरे राष्ट्र को हम उसको एड्रेस कर पाए। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। सो मॉर्निंग में इसके ऊपर भी डिस्कशन हुआ था कि ग्रेडिंग, जो नैक की ग्रेडिंग होती है, नायरफ ग्रेडिंग होती है, उसमें भी ऑनलाइन और डिस्टेंस कोर्स कितने वो इंस्टीट्यूट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। और इसमें इनोवेशन की जरूरत होती है, इसमें भी सेम प्रोसेस लगता है जो हम नॉर्मल करिकुलम डेवलप करते हैं, वही 6 स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं ऑनलाइन एजुकेशन में भी, क्योंकि आपको पहले नीड पता लगानी होती है, एंड देन उसका इम्पैक्ट पता लगाना है थ्रू द इवैल्यूएशन, इम्पैक्ट ऑन द स्टूडेंट्स एज वेल एज द इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। और उस एजुकेशन प्रोग्राम का भी क्या इम्पैक्ट हुआ ये भी कंटिन्यूसली असेस करने की जरूरत होती है। सो इट इज नॉट एन इजी जॉब टू मेक इट ऑनलाइन कोर्स, although it is very easy to put on the YouTube or something on some other channels, but how to have the impact on the society is very important। जब हम बात करते हैं कि लैंग्वेज की, तो ज्यादातर कंट्रीज जो है, डेवलप कंट्रीज हैं, उन्होंने अपनी लैंग्वेज को ही इस्तेमाल किया। हम जापान की बात करें, चाइना की, कोरिया की, जर्मनी की, फ्रांस की, तो दे हैव डेवलप देयर ओन सिस्टम। उन्होंने अपनी भाषा में ही अपने कोर्स को डेवलप करे। और जब ऐसा अपनी भाषा में, मातृभाषा में या अपनी लोकल लैंग्वेज में आप जब बात करते हो तो आपको समझ अच्छी आती है, उसको हम अच्छी तरह समझ सकते हैं और अपना एक्सप्रेस भी अच्छी तरह कर सकते हैं। तो प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द हायर एजुकेशन। जहाँ तक टेक्निकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल में लोकल लैंग्वेज या इंडियन लैंग्वेज का यूज है, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग तो है, बट अभी हमने देखा कि मध्य प्रदेश में इसका एक्सपेरिमेंट हुआ। मध्य प्रदेश में इसका एक्सपेरिमेंट हुआ है जिसमें
So, जो हायर एजुकेशन में प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज और स्पेशली मेडिकल और इंजीनियरिंग में थोड़ा डिफिकल्ट हुआ है। मध्य प्रदेश में उन्होंने इसके ऊपर कोशिश की है। ये कोशिश बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि हम कोशिश करके इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हम लोग का मेडिकल प्रोफेशन में है, टेक्निकल वर्ड्स को रिप्लेस करना बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन हम उसको अगर एक्सप्रेस कर पाते हैं तो सबसे अच्छी बात है। मेडिकल प्रोफेशन में हम लोग का जो डायरेक्ट होता है पेशेंट से कॉन्टेक्ट होता है। पेशेंट किस रीजन का है हमें उसी भाषा में अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ता है। तो उस डॉक्टर के लिए भी एसेंशियल हो जाता है कि उस लोकल भाषा को भी अच्छी तरह जाने, क्योंकि जब कम्युनिकेट आप प्रॉपरली कर पाते हो फिर ट्रीटमेंट उसका और बेटर हो जाता है। तो लोकल लैंग्वेज पे जानना इस इन द प्रोफेशनल कोर्स इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रोफेशनल एजुकेशन शुड टारगेट टू बिकम द मल्टीडिसिप्लिनरी। So what are the outcomes of the NEP 2020? ये हमने देखा universalization of the early childhood care and education to the secondary education by 2030, aligning with the SDG goal 4, attaining the foundation learning and numeracy skills through national vision by 2025, 100% GER in the preschool to secondary school level by 2030, and bring back the 2 crore out of the school children to the school. Teachers to be prepared for assessment reform by 2023. Inclusive and equitable education system by 2030. Board exams to test the core concepts and application of the knowledge. And every child will come out of the school adapting at least one of the skills. And the common standards of learning in the private as well as the private public schools. So the implementation. The most important thing about the implementation is that the spirit and the intent of the policy is to be given the highest value. So at this time it is a just exploratory in nature. हम लोग अभी इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं कि इसके क्या पॉलिसी के कंपोनेंट्स क्या हैं, और ये इतना बड़ा पॉलिसी डॉक्यूमेंट ऑल्सो 66 पेज का पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, बट इसको जो फ्रेमवर्क करिकुलर फ्रेमवर्क बनाया है स्कूल एजुकेशन के लिए वो 600 to 700 पेजेस का है। दैट इज a huge document and it needs a time to understand this document, and the phased implementation with all steps in tandem is very important. When we talk about the education in the foundation age between 3 to 6 years of age, this is very important where the base of the concept of the education are built. Also it is very important to prioritize with the optimal sequencing. क्या चीज हमारे लिए इस समय महत्वपूर्ण है उसको हम ज्यादा प्रायोरिटी दें, और जो लेस महत्वपूर्ण है उसको हम बाद में इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। तो अभी हमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है पॉलिसी है क्या, और स्कूल एजुकेशन में हम टीचर्स का रोल क्या है, मेडिकल टीचर्स का रोल क्या है कि फैकल्टी डेवलपमेंट के थ्रू कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड कॉम्प्रिहेंसिवनेस इन इम्प्लीमेंटेशन इज ऑल फेसेस आर इंटररिलेटेड। हम एक चीज को जब सोच रहे होते हैं तो साथ ही साथ दूसरे के ऊपर भी हम बैकग्राउंड में वर्क करना शुरू कर दें, ये कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी तभी इम्प्लीमेंट हो पाएगी। बीइंग ए कॉन्करेंट सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है कि इट इज नॉट ओनली फ्रॉम द स्टेट बट आल्सो द सेंटर, सो द सेंटर एंड द स्टेट शुड वर्क टुगेदर। There may be some state which may be like lagging behind the implementation or may deviate for some reason or other, but if they understand the policy document properly, तो implement करना आसान हो जाता है। Careful parallel linkages and setting of the early childhood care and education are very important. मैं इन सब चीजों को इसलिए बता रहा हूँ कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का हेल्थ केयर प्रोफेशन में काफी बड़ा रोल हो जाता है। जैसे मॉर्निंग में जब बात हुई थी कि जब बच्चा एंटर करता है मेडिकल स्कूल में तो 12th के बाद एंटर करता है, उस 10th और 11th एंड 12th में अपने उसने सब्जेक्ट चूज किए होते हैं, लेकिन उस समय उसका एप्टीट्यूड हम टेस्ट नहीं कर पाते। और आजकल जो ट्रेंड हो गया है कोचिंग का कि बच्चा 7th या 6th क्लास से कोचिंग करता है, तो उसका माइंड होता है, ब्रिलियंसी होती है, he learns about the subject too much, लेकिन उसका एप्टीट्यूड हमें पता नहीं चल पाता है। और इसीलिए हमारा जो चेंजेस की जरूरत है कि अगर हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फुल स्पिरिट से इम्प्लीमेंट होती है तो इसका इम्पैक्ट हमारे प्रोफेशनल एजुकेशन में बहुत ज्यादा आएगा। जब बच्चे का एप्टीट्यूड इस तरह का होगा, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग से वो गुजर चुका होगा, तो उसका जब मेडिकल स्कूल में इंजीनियरिंग कॉलेज में एंटर करेगा तो इम्पैक्ट विल बी डिफरेंट। सो ये रेगुलेटरी बॉडीज इसमें प्रपोज की गई है। वन इज द हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, और इसके अंदर 4 वर्टिकल्स हैं।
One is the National Higher Education Regulatory Council, National Accreditation Council, National Education Grants Council and General Education Council. So इनके चारों के पर्पस अलग अलग हैं. एक एक्रेडिटेशन के लिए है, एक आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क डिवाइस करने के लिए, एक ग्रांट्स कितना उस इंस्टीट्यूट को देना है, और एक जनरल एजुकेशन काउंसिल है जिसमें कि ज्यादा फिलॉसफीज आर देयर एंड देयर इम्प्लीमेंटेशंस आर इवैल्यूएटेड. लेकिन इसमें मेडिकल और लीगल कोर्स को इसमें नहीं रखा गया एंड दे हैव अ सेपरेट काउंसिल्स. सो प्रोफेशनल एजुकेशन इन द हेल्थ केयर फॉर द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स. ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हम जब देखेंगे तो उसका 20.5 जो पॉइंट्स है उसमें एक पैराग्राफ में पूरा दिया हुआ है कि व्हाट इज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स. इसमें I will read it. Healthcare education needs to be re-envisioned so that the duration, structure, and design of the education programs need to match the role requirement that graduates will play. ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें अपने एजुकेशन को, प्रोफेशनल एजुकेशन को, मेडिकल एजुकेशन को नीड बेस्ड बनाने की जरूरत है. हम पहले से उसके फ्रेमवर्क नहीं बना सकते. हमारी नीड्स क्या है, और नीड्स का भी है कि जो नीड्स हमारी चेंज होती रहती है. अभी हमारी नीड्स डिफरेंट हो सकती है. पेंडेमिक के टाइम डिफरेंट थी, लेकिन पेंडेमिक्स ने हमें बताया कि डिजास्टर्स के लिए प्रिपेयर्डनेस बहुत जरूरी है, इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर्डनेस बहुत जरूरी है, और कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए हमें बहुत जरूरी है. जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है चेंज हो रहा है फ्रॉम द जनरलिस्ट, एक फैमिली डॉक्टर से स्पेशलिस्ट की तरफ. उसके बहुत सारे रीजन है. उसका एक तो रीजन है कि हमारी सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस चेंज हो रहे हैं. सोसाइटी ये एक्सपेक्ट करती है कि हमारी बॉडी है वो दैट इज ए बायोमेडिकल डिवाइस, एक बायोमेडिकल मशीन की तरह है, एंड इफ एनी ऑर्गन इज नॉट फंक्शनिंग आई विल कंसल्ट दैट ऑर्गन स्पेशलिस्ट. और उसमें क्या होता है, नुकसान ये होता है कि वी नेग्लेक्ट द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और जबकि ह्यूमन बॉडी इज द मोस्ट इंटीग्रेशन among all the living beings, that is a thinking mind with a beating heart, with the emotions of all the parts of the body, blood flowing in every organs and all the organs functioning in tandem and in synchrony. So हमारे स्पेशलाइजेशन पे नुकसान यही हो रहा है कि हम लोग बहुत ज्यादा स्पेशलिस्ट की तरफ सोचने लगे, और ये सोसाइटी में भी परकुलेट कर गया. हमारे जो एमबीबीएस डॉक्टर्स को इम्पोर्टेंस बहुत कम दी जाती है, बिकॉज वो सोचते हैं कि इसको कुछ नहीं आता होगा. और ये रीजन अभी हमारे जो रिसेंट इस तरह के एपिसोड्स होते हैं उससे और रिफ्लेक्ट हो रहा है कि हमारे जो मेडिकल डॉक्टर्स का इतनी नॉलेज ज्यादा होती है बट दे आर नॉट कॉम्पिटेंट इन द स्किल्स. सो हमारा जो फर्स्ट एम है कि हम जो नीड है हमारी सोसाइटी की उसके ऊपर टारगेट करें, दैट इज बिल्डिंग द स्किल्स एंड द कॉम्पिटेंसी ऑफ द डॉक्टर फॉर द कॉमन प्रॉब्लम्स फर्स्ट. सेकंड इज द जो स्टूडेंट्स का असेसमेंट है, दे शुड बी एट ए रेगुलर इंटरवल्स ऑन अ वेल डिफाइंड पैरामीटर्स. इसका मतलब है कि दैट इज फोकस इज अगेन ऑन द कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन. जब तक वो पार्टिकुलर स्किल नहीं आ जाती द स्टूडेंट शुड नॉट पास टू अनदर फेज. लेकिन प्रैक्टिकली इट इज डिफिकल्ट बिकॉज आवर कोर्स इज ऑफ 4.5 years with 1 year of internship. So we have to somehow adjust the same thing in a 4.5 years. Given that people exercise pluralistic choice in the healthcare, so हम जब बात कर रहे थे कि बहुत सारे पेशेंट्स हैं वो ये चाहते हैं कि उनके सिम्टम्स रिलीफ हो जाए इमीडिएटली, और किसी तरह से उनको रिलीफ हो जाए. They are not concerned about the root cause of this disease. So sometimes the modern medicine may not give the answer to all their questions, and they take their route to the other pathies also. So here they have given that our healthcare education system must be integrated, meaning thereby that all the students of the, although this word is not correct, allopathic, it is a modern medicine. The modern medical education must have a basic understanding of our Ayurveda, Yoga, Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy, Ayush, and vice versa. That means there is a like awareness and respect for the other specialty or other system of medicine, because the patients are seeking their help with this system also. And it is also possible that our thinking is that the biomedical thinking of our concept is deep-rooted. It is not the holistic. That is how the health is there, and we are not concentrating on the health of the people. So, if any person has any symptom, and we are not able to diagnose that symptom or that disease, it does not mean the patient does not have that disease. It is occurring at a very molecular level or some other level,
by which our clinical judgment and our modern medical technology is not picking up. Although it is possible that in the next 5 years or 10 years, the technology will so advance, like example, magnetic resonance imaging may improve, and there is a concept of using this in a nanoforms that we can detect the molecular basics of the disease inside the body. But that will take a very long time, and also the clinical judgment should be in congruence with our technology output. So that's why the health professional education need to target about how we can use our clinical judgment, that is precision in the clinical thinking, to the utmost. So that the patient relief can be there. And also it is very important that we should not, if we are not able to diagnose the condition of the patient, हम उसको बीच में ना छोड़ दें. We should continue the patient, keep at follow up that patient till we be able to diagnose the condition. Here comes the role of family doctors. So a specialist may not pick up the disease, but he should come back to the family doctors, and they should have enough faith and the trust in the family doctor. He will take care of the patients for the overall well-being of the patient. And if any other condition arises, he will be able to pick it up first. So that's where this system of Ayush and integrative medicine is now coming up. There shall also be much greater emphasis on the preventive health care. So that is very important, because once we become diseased, then we also only visit the doctor. The holistic care means that even the normal person needs a follow up with the treating patient, and that's where the our माननीय प्रधानमंत्री ने बोला है कि जो हमारा आयुष्मान भारत का जो एक कंपोनेंट है वो है इंश्योरेंस स्कीम, दैट इज 5 लाख का ट्रीटमेंट फ्री हो. लेकिन दूसरा कंपोनेंट है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिसके ऊपर ज्यादा हमारी जागरूकता नहीं है. हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को ऐसा एस्टेब्लिश किया है कि वो पेशेंट के नजदीक के एरिया में लोकेटेड होते हैं, और वहाँ पे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को उसने पेशेंट से लिंक कराया और साथ में स्कूल से भी लिंक किया हुआ, और वहाँ पे प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव हेल्थ के ऊपर ज्यादा फोकस है कि हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं. एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को हम यूज कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ केयर डिवाइस से हम अर्ली स्क्रीनिंग करके डायबिटीज, हाइपरटेंशन या कोई और भी डिजीज डिटेक्ट कर सकते हैं. जो कॉमन साइकोलॉजिकल मेंटल इश्यूज हैं वो हम हैंडल कर सकते हैं, और प्रॉपर रेफर हम कर सकते हैं उसको टू द टर्शियरी केयर सेंटर और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. तो सभी का रोल इसमें बना हुआ है कि जो हमारा प्राइमरी केयर फिजिशियन है, फैमिली डॉक्टर का कुछ रोल होता है, स्पेशलिस्ट का डिफरेंट रोल होता है, और एक्सपर्ट्स होते हैं जो स्पेशली पार्टिकुलर डिजीज को ही डील करते हैं, उनका डिफरेंट रोल होता है. टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स हैं, टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, इनका बहुत बड़ा रोल हो जाता है हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए. सो इन सबको देखते हुए हम जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो ऑब्जेक्टिव्स है कि हेल्थ मेडिकल एजुकेशन में रिफॉर्म्स लाने चाहिए, उसका रीजन ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्वालिटी इंप्रूवमेंट की तरफ. क्वालिटी इंप्रूवमेंट का मतलब है कि वी डोंट ब्रिंग अबाउट द वेरी ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस, वी जस्ट मेक ए स्मॉलर चेंजेस इन आवर प्रोसेसिंग एंड वी सी द इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी. A small impact of reducing the queue time or queuing lines in the OPD area, or managing the patients in a way that he can get the relief earlier. So that is a quality improvement, and that is a very important exercise which should be inculcated in the curricular reforms. So we need to reform our curriculum in such a way that the quality improvement should be important component in the medical education. And this should be integrated both horizontally and vertically. जब हम बात करते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन की और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन की, हॉरिजॉन्टल होता है कि एक ही प्रोफेशन के जब सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं तो उसमें आपस में कोऑर्डिनेशन हो, इंटीग्रेशन हो. और वर्टिकल इंटीग्रेशन का है कि फर्स्ट प्रॉफ के सब्जेक्ट का फाइनल प्रॉफ के सब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेशन हो. जब वो क्लिनिकल पेशेंट जब जाता है प्रॉब्लम के लिए, उसको हम इंटीग्रेट करें फ्रॉम द फर्स्ट प्रॉफ और सेकंड प्रॉफ सब्जेक्ट एज वेल. सेकंड जो इम्पोर्टेंट रिफॉर्म्स की जरूरत है कि कैपेसिटी बिल्डिंग, दैट इज not only for the teachers but also for doctors. And National Medical Commission ने अभी जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है उसको अभी लाने जा रहे हैं गजेट नोटिफिकेशन से. उसमें कंपोनेंट ये भी है कि हर डॉक्टर को कंटिन्यूअसली प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना पड़ेगा. He has to attend the credit points every year, every 5 years for renewal of their registration to the National Medical Commission and the State Medical Council. तो कैपेसिटी डेवलपमेंट के लिए CPD प्रोग्राम्स बनाए जाने की जरूरत है, उससे हम कैपेसिटी डेवलप कर सकते हैं. दूसरा टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है. टीचर्स कैन हैव द फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम इन द मिडिल कॉलेजेस.
हमारे इतने सारे मेडिकल इंस्टीट्यूट बन रहे हैं. There are tertiary care institute also, big institution, and there are district hospital which has been converted to medical colleges. They need a faculty development, and this is the most of the crux of the, full of the heart of the uh, reforms in the medical education. अगर हम फैकल्टी को टारगेट करते हैं और उसको डेवलप कर देते हैं तो बहुत सारे चेंजेस हमारे सोसाइटी में अपडेट होने शुरू हो जाते हैं. थर्ड होता है कि परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव. परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव का मतलब कि फैकल्टी और जो इंस्टीट्यूशन को कुछ इंसेंटिव मिलना चाहिए. फैकल्टी को इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स, इन द फैकल्टी प्रमोशंस, इन द करियर एडवांसमेंट और सम अदर फॉर्म ऑफ इंसेंटिव, सो दैट विल हेल्प देम टू डेवलप दोस कैपेबिलिटीज. एंड द इंस्टीट्यूशन को आल्सो परफॉर्मेंस के बेसिस पे मिलना चाहिए कि उसका डेवलपमेंट हो पाए. जो भी हाई रैंकिंग इंस्टीट्यूट आए हैं जैसे कि एम्स दिल्ली है, SDBJ, KGM है, उसका विजन ये था कि they have established a very important role for incentivization of everything, the research, the patient care, as well as the medical education. So, जब हम इस रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे ऐसी चीजें आती हैं जो अभी हमें नए टर्म्स लगते हैं बिल्कुल, और वो नए टर्म्स को भी समझने के लिए फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम की जरूरत है. और ये कुछ नए टर्म्स ऐसे हैं जैसे कि स्किल है फाउंडेशन कोर्स. फाउंडेशन है कि नींव को रखना. जब हम नींव रखते हैं किसी की और हम स्ट्रॉन्ग नींव रखेंगे तो उसके ऊपर जो बड़ी बिल्डिंग बनेगी वो स्ट्रॉन्ग रहेगी, किसी भी झटके को बर्दाश्त कर सकती है. और इसके ऊपर जोर था पिछले एनसीआई का भी और नेशनल मेडिकल कमीशन का भी कि फाउंडेशन कोर्स के ऊपर हम ज्यादा स्ट्रेस दें. एंड फाउंडेशन कोर्स कुछ इंस्टीट्यूट ने जैसे एम्स जोधपुर ने थोड़ा सा अलग तरह से एक्सपेरिमेंटेशन करके फाउंडेशन कोर्स को थ्रू आउट 4.5 ईयर किया. बट नेशनल मेडिकल कमीशन ने कहा कि फर्स्ट ईयर के बच्चों को फाउंडेशन कोर्स में इंक्लूड करना चाहिए. इसमें क्या होता है, देयर आर वैरायटी ऑफ वेज टू डू इट, एंड इसमें स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द प्रोग्राम अक्रॉस ऑल इंस्टीट्यूट इन द कंट्री इज रिक्वायर्ड. कि सभी इंस्टीट्यूट में सेम फाउंडेशन कोर्स की तरह का होना चाहिए. एटीट्यूड, प्रोफेशनलिज्म, हमें रिस्पेक्ट टू द अदर स्पेशलिटीज, रिस्पेक्ट टू द व्हाट इज द मेडिकल प्रोफेशन इज ऑल अबाउट, और हाउ हम टेक्नोलॉजी को बेस्ट यूज कर सकते हैं, हम जो अपने कोर्स करिकुलम है उसको बेस्ट यूज कर सकते हैं एजुकेशन के लिए. तो ये फाउंडेशन कोर्स के अंदर में आ जाता है. सेकंड इज द इंटीग्रेटेड लर्निंग. आई विल कम टू इन डिटेल अबाउट द इंटीग्रेटेड टीचिंग, बट इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द गुड अवेयरनेस इज रिक्वायर्ड. सो एवरीबॉडी शुड बी अवेयर अबाउट द व्हाट इज इंटीग्रेटेड टीचिंग. एंड प्रेजेंट जो अभी सिचुएशन असेस की गई उसमें पाया गया कि बहुत सारा फेयरली गुड एक्सेप्टेंस है most of the medical colleges को, because basic course in medical education technology launch किया गया. इसके साथ ही curriculum implementation support program के थ्रू ये नई टेक्नोलॉजी को अप्राइज किया गया all the faculty members को. But again इसमें भी standardization की जरूरत है और हमें जरूरत है कि we have to go beyond the departments. Still अभी department solo silos में भी work करते हैं, they are not working in integrated manner. The third component जो इसमें important है that is early clinical exposure. जब स्टूडेंट्स आता है मेडिकल स्कूल में तो उसको लगता है वो डॉक्टर बनने आया है, लेकिन फर्स्ट ईयर में उसको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री ऐसे ड्राई सब्जेक्ट इस वे में प्रेजेंट किए जाते हैं कि उसका इंटरेस्ट भी खत्म होने लगता है. तो हमारा जो इसका पर्पस है अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर है कि हम फर्स्ट ईयर से ही पेशेंट का एक्सपोजर कराएं. पेशेंट का एक्सपोजर कराना एक अलग है, इनोवेशंस पे भी डिपेंड करता है और फैकल्टी के कॉन्सेप्ट पे भी डिपेंड करता है. ये अभी बहुत लेस कॉमनली हमने कम्युनिटी बेस में यूज किया. अभी ज्यादातर हम इसको क्लासरूम सेटिंग में यूज कर रहे हैं, बट इट इज मोर यूजफुल इन द रियल लाइफ इन द कम्युनिटी सेटिंग. और इसके लिए बेटर पेडागोगिकल मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड कि हम किस वे से अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर दे सकते हैं. Then the fourth important new skill is teaching of the clinical skill. Teaching of the clinical skill का मतलब है कि there is a basic orientation to the basic science as well as the clinical science, and how to examine the patient, how to take the detailed history, how to interpret that history in a form which can be like useful for the patient care. Again, skill के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन ने बोला है कि अब सब मेडिकल कॉलेज में स्किल लैब होने की जरूरत है, और स्किल लैब को इफेक्टिवली यूज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. स्किल लैब से हम बहुत सारी चीजें गेन कर सकते हैं. एक हम सेफ जोन में स्टूडेंट्स को एक्सपोज कर सकते हैं कि क्लिनिकल प्रॉब्लम क्या हो सकती है, और हम जब इमरजेंसी में ले जाते हैं तो रियल लाइफ सिचुएशन उसको डील करने की जरूरत पड़ती है, और रियल लाइफ में मिस्टेक ना हो, सो स्किल डेवलपमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है.
So when we talk about all these four components, the most important is competency-based medical education. मॉर्निंग में भी डिस्कशन हुआ था, कल भी डिस्कशन हुआ था कि आउटकम बेस्ड अप्रोच of the design, implementation, assessment, and evaluation of medical education program is now recognized worldwide. The fractional report in 1901 says that there is a huge lack of competency among the medical graduates, and they started the reformation right from there. But our country, since 2010, have started working on that area. In 2012, the Medical Council of India at that time took the decision of implementing the competency-based medical education, but it failed. But they prepared a good document, that is the Indian Medical Graduate 2015, which has all the components which was later on introduced in 2019 across the country. So the competency-based medical education, I will explain what is the meaning of that. इसके 6 core component होते हैं, 6 core competencies component हैं. One is the medical knowledge. Second is the patient care and procedural skill. Third is professionalism. Fourth is interpersonal and communication skill. Practice-based learning and improvement, and system-based practice. तो अभी हमारे जो students हैं, mostly they are working in these 3 areas only. They are very proficient in the medical knowledge. You can ask anything about genomics, molecular medicine, or the enzymatic pathway. They are able to tell each and everything in very detail. And these are the students who are clearing these PG entrance exams, the way which is formatted today. अभी हम जिस तरह का एग्जाम करते हैं PG entrance का, वो formatted इसी तरह का कि आपका रोड memorization को ही ज़्यादा बढ़ावा मिलता है. And they are based mostly on the medical knowledge. To some extent, patient care and procedural skills they know just little bit, but they are not confident enough to implement in the practice in the company. Third is professionalism. That depends on the attitude. National education policy banks on developing the character. The most important character is that you have a good character, honesty, and values. The value-based system, and the professionalism also one of the part of the value-based system. That is what we expect from the patient is same what the patient expects from us. So if the patient, we know that the patient does not know, because when the patient comes in the emergency or OPD, he does not know, he is not aware of the doctors. But as a doctor, we are aware the patient has some problems. So that awareness should be created among the medical graduates. That is the professionalism. And we very loosely use the word rapport. When we talk about the rapport patient से हम theoretically बताते हैं इसको कि rapport build करो patient के साथ. But really rapport building is a very long process. It needs a very high degree of thinking, cognitive skills, and also communication skills. आप जब पेशेंट्स को अंडरस्टैंड कर पाते हो और वो आपको अंडरस्टैंड कर पाते हैं, then it's a rapport. That means कि आप कोई भी चीज उसको बता दो, the patient will be able to accept it without any resentment. लेकिन अगर आपने कोई चीज ऐसी बताई वो पेशेंट एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है और आपको अटैक कर रहा है, that means you have not developed the rapport. And this is a very important concept of the interpersonal and communication skill. The fifth is the practice-based learning and improvement. तो जब इंटर्नशिप में जब स्टूडेंट जाता है वो अपना प्रोसेस स्टार्ट करता है पेशेंट देखने का, तो उसमें कई चीजें उसको लगता है कि हमारी डेफिशिएंट है. गाइडलाइंस जो हमारी होती है थेरेपी की, ट्रीटमेंट की, वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती है. पहले तो 5 साल में गाइडलाइन चेंज होती थी, बट नाउ एवरी वीक guidelines may change because of the technological advances. And that's why the student should be very much aware of the evidence-based medicine and the clinical evidence-based medicine. And for that, the quality improvement is more working is required. And this is a continuous process. So this is a core competency which is to be taught in a competency-based medical education. And lastly, the system-based practice. Now, system-based practice is the way we teach the medical students. They are trained in a tertiary care hospital or a district hospital or medical college, which has all the facilities, but they don't know how to deal with a patient in a different situation, in a health and wellness center or a primary health center or a resource poor center, जहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, उनका हम केयर कैसे कर सकते हैं और रिफर करेंगे तो हम कैसे करेंगे, ये भी उसको नहीं पता. तो सिस्टम बेस्ड प्रैक्टिस का मेन होता है कि that you should be able to practice anywhere and you should be like respectful for other system of medicines like Ayurveda,
Unani Ayush system, and all any other system which is there in the country. So that system-based practice, he should be aware of all the other system and also aware about how to practice in different situations. So this is a diagrammatic differentiation की एक traditional system है और competency based medical education में difference क्या होता है? Traditional based system में क्या होता है? Curriculum पहले डिजाइन किया जाता है. तो पहले curriculum डिजाइन कर लेते हैं टीचर्स बैठ के and then students का एंट्रेंस होती है और फिर उसको एजुकेशन ऑब्जेक्टिव की बेसिस पे हम उसको असेस करते हैं. So इसमें आपका curriculum development is first. जबकि competency based education का मॉडल ये है कि हमें पहले health needs और हेल्थ सिस्टम हमारे कैसे हैं इसके बारे में अवेयर होना बहुत जरूरी है एंड बेस्ड ऑन दैट वी ब्रेक डाउन द whole of the component of these health needs into smaller components. They are known as competencies and skills, and these the pedagogical methods are used whether it should be practiced or taught in the classroom or in the real world or in the community. What type of faculty are required, what type of integration is required, what are additional resources are required. तो ये सब चीजें इसमें डेवलप करके करिकुलम डेवलप होता है दैट इज ए कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम एंड इसका जो असेसमेंट आइडियली शुड आल्सो बी कॉम्पिटेंसी बेस्ड लेकिन अभी हमारा प्रेजेंट सिस्टम है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट के लिए रेडी नहीं है बिकॉज लॉट ऑफ फैकल्टी डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड इन दैट एरिया सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द traditional and the CBME is most important is that it is a outcome based. Competency based is outcome based, and the most important emphasis on the formative. कि हम बच्चे को feedback देके उसको कैसे change करें. So when a competency based curriculum introduce किया जाता है तो उसमें हमारी बच्चे की जो first of all जब वो enter करता है वो observe करता है. Vicarious learning होती है. He learns from observation from the seniors. Then the second stage में वो direct कुछ मैनेज करना शुरू करता है, but under the supervision of the direct. And third is that he goes in the indirect observation. Fourth, distantly or remotely हम उसको monitor कर सकते हैं कि whether the student is performing. So this is a 4.5 years of the education which is supervised. Then comes the internship period, in which the training is there, and which is based on the summative exam. He is permitted to do the internship. And after this, the most of the deliberate decreasing supervision is required in this area. But again, it still requires supervision. And ultimately, this is an area where it needs to be targeted about the competency development. So the observation on a single-handed under supervision to the indirect or distant observation is all those competency developed. And when the medical students enter the medical school, he wants to become a doctor. So this is one of the analogy. कि अगर if we give you बिरयानी आपको देंगे तो आपको अच्छा लगेगा लेकिन अगर हम बिरयानी के कंपोनेंट्स ब्रेक करके अलग-अलग से देंगे तो you will not find tasteful. So integrated teaching का मतलब ये है कि हम कैसे कंबाइन कर सकते हैं डिपार्टमेंट्स को, टीचिंग मेथोडोलॉजी को और टीचिंग के डिफरेंट कंपोनेंट्स को एक साथ कैसे कंबाइन कर सकते हैं. So ये इंटीग्रेशन का जो लैडर है वो बेसिक है आइसोलेशन से स्टार्ट होता है कि अभी हम लोग जो मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल्स आर इन आइसोलेशन वो अपने डिपार्टमेंट वाइज वर्क करते हैं दे डोंट कम इंटरैक्ट विद ईच अदर. सेकंड इज द अवेयरनेस दैट दे बिकम अवेयर ओके देयर इज अनदर डिपार्टमेंट व्हिच इज टीचिंग दिस एरिया. Actually some of the topics are there which are common in the all the departments. Then the nesting, some of the portion of this one of the department is taken to another department and that it is taught to the students. Temporal coordination is that we are aware what is the teaching program and the teaching things which are done in the other department. Then the sharing is that we share some of the common components among the 2 or 3 departments. Then comes the coordination, complementary and multidisciplinary and the interdisciplinary. And the last stage, that is the 11th ladder, is the transdisciplinary, which is almost impossible anywhere in the world. But the people are trying and they are reaching towards the transdisciplinary, in which the patient is the only at the center stage and no department teaching is there. One of the universities in the Europe, they are working on that transdisciplinary model. That same patient is given in the first year and the basic structural and functional understanding is given to the students. Same patient is exposed in the final year. And here the patients, how the patient is managed and they are referred or they are followed up. So that is a spiral education model of competency based with a full integration. So this is the ultimate integration which is
which is possible because of the will of the faculty members. So coming to the early clinical exposure, we have three settings: classroom setting, hospital, and community setting. In the classroom, mostly it is a theoretical discussion. When we go to the hospital, it is a primary care exposure. When we go to the community visits are in the form of some of the exposure, that is, what are the community common problems in the society. So training in the basic clinical science skills and the demonstration of the clinical problem is the core concept about the early clinical exposure. And this is done in the context. What is the context of the patient, and ultimately leading to the relevance. What is the relevance of managing this problem? So the early clinical exposure is one of the important introduction in the one of the important component in the competency-based medical education. Another very important component in health professional education is the problem-based learning. So why the problem-based learning has been thought of is because it suggests some new models of education, and it was also amenable to the accreditation across the countries. That is, the one standard can be compared to the other country also. And this is now the global minimal essential requirement, which is given by the National Committee on Medical Education (LCME). So that's why the problem-based learning is now occupying most of the important part of the medical education. And what happens in the problem-based learning is that one of the problem is that broken down into multiple small components, and these small components are learned in a form of tutorials or multiple teaching settings, and most of the teaching occurs at home or in a self-directed manner. And later on, this all the information is integrated to form the patient-related relevant to the patient condition. So this the students identify his own learning needs. He identifies his own deficiency in the knowledge. He identifies own deficiency in the skills, and he try to develop those skills by reading, by interacting with the faculty members, with the experts. What is important is the from the problem-based learning is that the tutor should be trained in the problem-based learning concept. They may or may not need to be expert in that subject, but they will be able to connect to the experts. So whenever the students come with some problems, the facilitator is there to guide them. Okay, you can talk. This is the way I know, but you can contact this person or a neurologist or neurosurgeon. He will tell you in detail. So it is a self-directed learning. He may go to that person also, and he may also search through the internet or chat GPT or some other resources. So basically, it is the most important is that you break down the problems into small components, and the emphasis is on the applications, how it can be applied for the real life situations. So that is what is required in the NEP also. In the National Education Policy 2020, it is most important right from the beginning. We should start with the problem-based learning. Although the context and the spiral nature of the problem-based learning will be a lower level in the earlier class, but as the students move to the higher class or the professional course, the level of spiral goes on increasing. So it becomes at a higher level. So that is if we can introduce this problem-based learning concept right from the first class in the student's life, and develop the self-learning, directed learning attitude, and lifelong learning concept among the students, I think our professional education will also improve markedly. This is a very old age concept that we know that assessment drives the learning. So if the way you format the assessment, you drive the learning of the student. When we talk about the medical entrance or the NEET UG, the students are taught in a way that they should be able to crack the three basic subjects. That is the physics, chemistry, and bio. But there is no assessment of the thinking process. There is no assessment of the aptitude. The West has taken a lead in this. They have devised a system which is more community oriented. They give it 4 years of pre-medical course, undergraduate course. In 4 years, they can know about the subject. They listen to the other subject also, relevant subject. They study about the community health problem, mental health problems. They also develop their hobbies in the specific area. Then they go to the medical schools. And their medical admission test is also based on those concepts only. It is not the rote memorization, but they are of higher order. So that's why the Indian government is also trying
Ministry of Health and Family Welfare and the National Medical Commission is trying very hard to bring about the uniformity in the education. And the way we format our examination, the way the student will learn. And that's why the uniformity in licensing for the MPS program is through the national exit exam. So this exam has been gazetted. It was decided to be implemented in 2023, but somehow it may be implemented from next year. Although this is like it is mandatory, so the people have to adapt according to that. So they have to change the curriculum accordingly. So if they have to survive and they have to pass the next, they have to have the competency-based medical education. They should have all the component of the early clinical exposure, integrated teaching, and higher order thinking, patient care, and skill development. So All India Institute of Medical Science, Jodhpur, under the leadership of Mr. Sanjay Mishra, 2012 to 2022, has taken some of the very unique initiatives. And the reason for all those was the strategic planning. And this strategic planning started in 2012 with a vision. Vision means that you should have some vision that you can reach a very high target. Suppose if you are thinking about the Chandrayaan landing on the moon, that is a vision, that is a dream. It is not necessary that the Chandrayaan may land. So it was a failure, but again, this will not deter us. And we keep on working on that vision. And the mission is to add the values to that vision. How we can do that? How we can develop the faculty members? How we can integrate everything? How we can align with our vision, our budgets, the financial constraints, the outcome, how we can evaluate at a regular interval. That comes under the mission. And lastly, the value addition is very important. That is not only the vision and missions, the values. What values we are going to inculcate among the medical graduates and the postgraduates who are coming out from the institute, that has to be decided first. So all this discussion was there for first 3 or 4 years. A lot of refinement has been done. The people have been taken into that aptitude. So we adopted one model. I think I'm sharing this model so that this is a model which can be adapted anywhere in the medical college. We have devoted a Saturdays for a unique teaching learning innovations. Now what happens in this innovations, we have divided two parts, 2 hour sessions, 9 to 11 and 11 to 1. So one is the integrated teaching with 3 or 4 departments. This integrated teaching with 3 or 4 departments was started where faculty from 3 or 4 departments come together and they were discussing on some common theme. So this theme was like hypertension or a pain abdomen or headache or convulsions, abnormal movements or anemia. So anything can be taken there. So the faculty does discuss with the students in the presence of the students. So students are the most important stakeholder. And the feedback was also obtained at a regular interval from the feedback about how they are perceiving this system. And the second component was unconventional learning experience. We only think about the lecture. We only think about the demonstrations. We only think about the skill lab. But there are things which are beyond that. That is, we can include some of the other methods which can improve the thinking process of the child. It can become more engaging, enjoyable also. So we use this method, unconventional learning experience, and both these methods, all the faculty were exposed to them. So from the anatomy to the neurosurgery, from the physiology to the medicine or gastroenterology, all the faculty were interacting to some extent or other, and they were aware of all the things which are happening in the departments. This also gave boost to the students' learning, and also some of the faculty members adopted some of these innovations which worked well into their own education and technology also in a regular class from Monday to Friday. So whether they are taking the lecture, whether they are taking the website teaching or demonstration or skill lab, they adopted some of these unique methods in their own learning style. So unconventional learning, we adopted that the students should be taken out of the classroom boundaries, wall of the boundaries. The lecture should be given in a way which is more conducive to the learning environment. तो स्टूडेंट्स को और अप्रिशिएट होता है कि वो नेचुरल वे में लर्न कर रहे हैं. एक हम स्मॉल ग्रुप्स में इसको टारगेट करते हैं. प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट स्मॉल ग्रुप डिस्कशन भी है. तो इसमें हम लोग स्टूडेंट्स को ले जाके डिफरेंट सेटिंग्स में इवन कम्युनिटी में ले जाके वी आर टीचिंग देम एंड दे आर गोइंग टू द लाइक हमारे हर्बल गार्डन है. So they visit the herbal garden. So they are exposed to some of the herbal drugs.
what are the constituent of that drugs, how they are refined, how they are used as a medicinal plant. तो ये सब चीजें उनको डिस्कस की जाती हैं. They are taken to the OTs, or sometimes the transfusion machine or the perfusion machine is brought to the classroom, and then students are exposed. Ultrasound machine is brought in the classroom, and they can understand how the varicose veins looks like. In the morning, we have a discussion about the flipped classroom. So we have validated this flipped classroom in the 6th semester students when they were in 2015, and the concept is a very useful and unique concept in which the classroom teaching is given at home, and the home is used and the classroom setting is used for the homework. What does this mean? Like हमने स्टूडेंट्स को या तो वीडियो दे दिया या पावरपॉइंट दे दिया या कुछ हैंडआउट दे दिया या स्मॉल ट्रांसक्रिप्ट दे दी जो छोटा सा होता है, एंड ही कैन लाइक गो थ्रू दैट इन हाफ एन आवर. इसमें जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते थे वो उसको इमीडिएटली फास्ट फॉरवर्ड करके देख के अपने सेटिस्फाइड हो जाते थे. ओके, कल क्लास में डिस्कस होने वाला है. और जो स्लो लर्नर थे वो उसको बार बार रिपीट करके देखते थे या फिर किसी और से भी इंटरेक्ट करके पूछते थे. तो अल्टीमेटली जब क्लास में सब बच्चे आते थे तो सबका एक यूनिक लेवल होता था, सबकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट वाज ऑलरेडी ऑन द सेम लेवल. अब हम उसको प्रॉब्लम देते थे, रियल प्रॉब्लम पेशेंट की देते थे. अब उसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो ग्रुप मेथड से या क्लिकर से या हम और मेथड से एंगेजिंग एनवायरनमेंट बना के उसको यूज करते थे. तो इसमें मोबाइल फोन को भी हमने यूज किया कि मोबाइल फोन को कैसे हम यूज कर सकते हैं प्री क्लास कंटेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. सो इसके 3 स्टेप होते हैं: प्री क्लास एक्टिविटी, second is the A class, and then it is application in the real life. So this is a flipped classroom which can be used, and most of the faculty they have start using in their own class also. So now they are giving the written material handouts or a video or a PowerPoint beforehand, so that the students come prepared at a basic level, and then they discuss about the higher level application or that knowledge. Other method we used was role plays, panel discussions, debate for some common topic, and we also use the clickers that we have already seen in the Kanpur Chhatrapati. We are using clickers, audience response system. तो इसको हमने सारे स्टूडेंट्स को हर एक एरिया में स्मॉल ग्रुप में भी यूज किया, कॉन्फ्रेंसेस में भी यूज किया, और इसको क्विजेस में भी यूज किया, असेसमेंट के लिए भी यूज किया, स्कूल एजुकेशन में भी यूज किया. इसमें क्या होता है कि अगर हमने 4 ऑप्शन दिए और बच्चे को अगर ऑप्शन, कई बच्चे होते हैं जिनको आंसर आता है वो तुरंत हाथ खड़ा कर देते हैं, और जो बिल्कुल बच्चे को आता हुआ है बहुत ही he is very shy type of child, he will not come out with the answer. और कभी-कभी लोग embarrassed फील करते हैं अगर उनका रॉन्ग आंसर हो जाता है. तो इसमें ये सारी चीजें हम उसको एड्रेस कर सकते हैं. तो जो बच्चे को रिस्पांस उसको करेक्ट पता चल जाता है आफ्टर द क्वेश्चन कि उसका रिस्पांस सही था, he will satisfied and confidence also. लेकिन अगर जो रिस्पांस जिसका नहीं सही है उसको रियल फीडबैक मिल जाता है लेकिन एम्बैरेसमेंट भी नहीं होता है. इसका एक और एडवांटेज ये होता है क्लिकर्स के साथ कि अगर आपने सपोज एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं और आपने 4 ऑल्टरनेटिव दिए, तो पता चला कि ऑल्टरनेटिव उसमें एक ऑप्शन सारे बच्चों ने, मोर देन 60% बच्चों ने एक ऑल्टरनेटिव चूज किया है, वो बिल्कुल रॉन्ग था, एंड व्हिच वाज नॉट द पर्पस ऑफ दिस क्लास. तो हम उसमें पेयर शेयर वाला मेथड यूज करते हैं कि दे कैन पेयर विद देयर कोलीग्स. अगर बगल वाले अपने कोलीग से वो इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हैं, एंड आफ्टर दैट वी अगेन गिव द क्वेश्चन अगेन. And if there is a change in the response, that means it is working. So this we have found it very successful, and this can be adopted in most of the classes. And now the online systems are also available, so there is no need for purchasing the gadgets. We also experiment with the COVID, and our institute was the first to start the online teaching during the COVID. So I'll just go through some of these COVID initiatives. We also adopted the family adoption program, in which the family is given right from the birth, and the students, most important is the communication with the family. Some unique initiative are School of Public Health, where we have started a Masters in Public Health program and an online executive program in health policy, public management, and leadership. And we are now going to start the MD MPH dual degree program. These are the 3 of the initiatives: the MD PhD dual degree program for physician scientist, MD MPH dual degree program for physician public health expert, and MD family medicine for multiple long-term conditions. And we have also tied up with the teams IT Jodhpur. Some of these innovations are there, entrepreneurial skills are developed, and we have also taken a satellite center at Sevoi, 260 km from
Jodhpur for the tribal health. And we have a collaboration, international collaboration with the Swedish, and now we have with UK also. And so there is a similarity between the NEP and the health professional education. Both are talking the same. That is, there more emphasis on the language and problem-based learning, outcome-based education, inclusivity in the education, multidisciplinary, preparing the lifelong learner, and also engaging teaching learning activities, the faculty development program. So all these things are there. So that's why the role of a doctor is same as a teacher. And why not the veteran doctors can also become a part of the national education policy? Sometimes they can devote for the education because they are aware as a pediatrician or psychologist more aware of the psychological issue of the children, and they can also contribute betterment for how to develop a program. Although this is happening with the NCRT and CBSE at a higher level, but as a medical profession, we can also contribute for the national education policy. So this is all about our concept. हमने जो बोला कि national education policy और medical health education में काफी similarities हैं और हम एक दूसरे को understand करके improve कर सकते हैं. Thank you. सबसे पहले मैं माननीय परमेश वैद्य श्री ब्रजेश पाठक जी जो हमारे यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद डॉक्टर कुलदीप जी, आपने बहुत ही अच्छा हमें बताया और काफी अच्छे से आपने एग्जाम्पल दिए। मैं थोड़ा सा इसमें ब्रीफ करूँगा जो आपने बताया, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मेरे को लगे वो इम्पोर्टेंट पॉइंट करते थे। जैसे आपने बोला हायर एजुकेशन में मेंटरिंग मिशन की इम्पोर्टेंस, फॉर एग्जांपल सीनियर या रिटायर्ड फैकल्टी को आप यूज कर सकते हैं। दूसरा है टेक्नोलॉजी का यूज करना, जैसे कि ऑनलाइन आप कर सकते हैं या डिस्टेंस एजुकेशन में आप कर सकते हैं। तीसरा आपने बताया प्रमोशन ऑफ द इंडियन लैंग्वेजेस, मैं काफी इसका पक्ष कर रहा हूँ कि हमारे कोर्स जो हैं थोड़ा सा इंडियन लैंग्वेजेस में भी होने चाहिए। फिर आपने बताया कि हेल्थ जो हमारा सिस्टम है, एजुकेशन है, मेडिकल एजुकेशन है, उस NEP 2020 का क्या रोल है। आपने एक जगह वर्णन किया कि आयुष के साथ इंटीग्रेशन होना चाहिए। मेरा यहाँ पर ये कहना है, हम कई बार सुनते हैं कि आयुर्वेदा की ड्रग बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे आप हल्दी लेते हैं, कर्क्यूमिन लेते हैं, तो ऐसे नॉलेज नॉलेज दूसरे में आती है, जैसे मॉडर्न मेडिसिन में आयुष की, आयुष में मॉडर्न मेडिसिन की, तो एक लिमिटेड उसमें तो ये पॉजिटिव स्टेप माना जाएगा। आपने बहुत अच्छे से बताया कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, आपने अच्छे एग्जांपल्स भी दिए। तो हम लोगों ने काफी अच्छा, लेकिन देयर इज लॉट्स टू बी डन इन दिस डायरेक्शन आल्सो। हम लोगों का एक गाइडेंस या गाइडलाइंस बननी चाहिए कि जिसमें हम बता सकें कि क्या रोल है आने वाले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, तो वो एक पूरा गाइडलाइंस और गाइडेंस बना। मेरे भी हम लोगों के बीच में यहाँ पर 3 संस्थान के CMU और राममनोहर लोहिया और अटल बिहारी मेडिकल यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर्स या वाइस चांसलर हैं। सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगा सिर्फ 2 मिनट कमेंट के लिए लेफ्टिनेंट जनरल Thank you, I think प्रोफेसर कुलदीप ने बहुत ही जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के उठाए हैं, और कई जो नेशनल पॉलिसी के हैं जो हेल्थ केयर एसोसिएटेड हैं, कई कॉमनैलिटीज हैं उसमें। प्रॉब्लम हमारी मेडिकल की 2 मेजर इश्यूज हैं जो मैं मेरी समझ से मैं जो समझता हूँ। तो सबसे पहले तो मेरा ये मानना है कि फैकल्टी
आप जो भी करना चाहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन, नई पॉलिसीज, न्यू स्ट्रक्चर्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग जो आप कह रहे हैं कि हम ये चेंजेस लाएंगे हम 2030 में, 45 में, बट जब आपके पास फैकल्टी नहीं होगी, और फैकल्टी जो आपने बताया, फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्किलिंग प्रोग्राम, अपस्किलिंग प्रोग्राम, जब तक वो सब नहीं होगा, आई थिंक हम लोग सोच तो है हमारी करेक्ट, इस इज द राइट डायरेक्शन, बट उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो माध्यम है, जो प्लेटफॉर्म है, वो होना बहुत जरूरी है, एंड आई थिंक दैट will continue to be a major challenge. I'm not saying it's not possible, it is possible, and the government is already doing it. Mantri has done so much in increasing the number of medical colleges and infrastructure, but मैं समझता हूँ कि ये अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि एक आपके पास फैकल्टी नहीं है, one, and two, आप उसकी ट्रेनिंग और अपस्किलिंग नहीं कर पा रहे to the extent that you want to achieve as far as your new education policy is concerned. To very but yeah, I'll take one more minute, and that is technology. Upgrading our technology, especially in government institutions, the budget constraints will continue to be a problem. Though government of Uttar Pradesh has been very forthcoming, and we have at least our major institutes have been given a lot of support. But मैं समझता हूँ कि ये भी एक अब to keep pace with the change of technology and keep pace with medical reforms is going to be one second major bottleneck which requires to be looked at. Thank you. Thank you, Professor Puri. Now may I invite Professor Soumya Nityanand, the Director of Ramanova Gloria Institute of Medical Sciences, for a short comment. Thank you, Dr. Biman. माननीय मंत्री जी, Dr. Biman, Dr. Kuldeep Singh, DC KJMU, DC Atal Bihari Vajpayee. I just have two comments here. I think this जो ये national education policy में जो emphasis है on preventive medicine, this is बहुत ही important है, and मुझे लगता है कि हम लोग के MBBS करिकुलम में इतना इस पे एम्फेसिस नहीं है जो होना चाहिए है। क्यों एक डिजीज को होने दे जब प्रिवेंट कर सकते हैं। So a greater focus in our teaching, both UG and PG teaching, should be on preventive medicine. I mean, look at it. You can prevent cervical cancer vaccine to a point of 95% by just giving cervical cancer vaccine, cervical cancer. So, and your lifestyle modifications for hypertension, for diabetes, for obesity, for cardiac diseases. So, I feel in our curriculum, this is a very important step which has been proposed by the National Education Policy, is to have an emphasis on preventive medicine, and as such on community medicine and community outreach programs, जो एक grassroots level तक जाते हैं, in improving the health status and in turn the economy of a nation. And number two, Dr. Kuldeep, I really like जो आपने अंत में बताया, that every institute must sit back and take guidance from the National Education Policy or the NMC norms, but have its own kind of innovations in teaching. Every institute must sit back, because it should be institute centric also to some extent, that आप अपना education को एक बारी बैठ के देखें और उसमें innovations and attractive points improvise करें. Thank you for this word. Now may I request Professor Sanjeev Mishra, Vice Chancellor of Atal Bihari Medical University. 2 minutes. आदरणीय मंत्री जी, प्रोफेसर पुरी, प्रोफेसर बिमन, प्रोफेसर कुलदीप सिंह, I think कुलदीप आपको बहुत बधाई, wonderful presentation. And what I would say is that as people, institutions and involved in medical education, it's time that we should not hesitate from experimenting in medical education.
we do not step out from the traditional way of learning and teaching. So if we experiment, definitely we will start there, and you will find that somebody will be a champion in every institution who will lead the cause for medical education. The second thing is about faculty. It can always start with the 2 or 3 people, and they can, small niders can develop into a larger thing. And I'm sure that a lot of us will take home important messages from this and try to implement these things. Thank you so much. Again, thank you for the wonderful presentation. Any questions from the audience? Yes. Please. Hello. Yeah. Good afternoon, sir. Myself, Dr. Pratibhanjan from AND Unity. Sir, my question to you is, as we were talking about preventive medicine, and then you said that there should be an integration with Ayush and all. So my question is, what's your take on integration of medical sciences with nutrition, and not just limiting it to dietetics or diet planning section, but also to integrate it with nutrigenomics or nutrigenetics, and also including it into the research sector also, so that we can prevent the patients from getting the disease. Definitely, that is what is meant by Ayush and other system of medicine. It is all of these concepts. The Ayurveda is also built around the nutrition only. And the nutrition. Now the people are talking about the genomics and the Ayush. Ayurveda and genomics, Ayurtechnology. So I think this is coming up, and gradually we have to develop the respect for others. So the nutrition and the humanities and the dietetics have the same respect from the modern medicine, and we expect the same for us also. So I meant, as we have different departments like Department of Anatomy, then Department of Biochemistry, so we should also have Department of Nutrition also in medical science. This is my suggestion. Okay, so what's your take on that? Yeah, definitely. There are most of the institutes now are having that. So for example, AIMS, all the AIMS have an Ayush wing also, and they have a nutrition wing also, nutrition division in the medical superintendent. And they are looking after their diet, and they are integrating, and we are also making aware our students. The people from outside are coming for the observership in the nutrition department. So I meant that we should take research into that section, including You nutrition. can talk to him. Yes, talk to this. और अंत में अब मैं हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय परम श्रद्धेय श्री ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कुछ 2 शब्द हैं इस पॉलिसी के बारे में और मेडिकल एजुकेशन के बारे में। शिक्षा मंथन के इस भव्य एवं गरिमामय समारोह में हमारे बीच में उपस्थित हैं प्रोफेसर धीमन साहब, प्रोफेसर कुलदीप जी, प्रोफेसर विपिन पुरी जी, प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद जी, प्रोफेसर संजीव मिश्रा जी, उपस्थित सभी मेडिकल साइंस से जुड़े हमारे फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स, पत्रकार मित्रों, सबसे पहले मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल महोदया का, जिन्होंने मेडिकल एजुकेशन की शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए नई शिक्षा नीति के तहत और हम क्या सुधार कर सकते हैं उस पर शिक्षा मंथन का आयोजन किया। बड़ी चुनौती हमारे सामने। उत्तर प्रदेश राज्य भारत का लगभग 1/5 हिस्सा है और दुनिया को हम मेडिकल साइंस में आगे ले जाने का उत्तरदायित्व आपके ही कंधों पर। आपने वो सब कुछ हासिल किया है जो दुनिया में हो सकता है, वो उत्तर प्रदेश में हो सकता है, भारत में हो सकता है, लेकिन सुधारात्मक प्रक्रिया लगातार जारी रहती है और नई शिक्षा नीति में हम और बेहतर क्या शिक्षा के उपबंध शामिल करके लोगों को सुविधाएं दे सकते हैं और लोग बीमार ही ना पड़े। अभी तक हम जो चिंता करते आए, रिसर्च करते आए हैं, वो बीमारी को दूर करने को लेकर। हमारा मानना है कि मेडिकल साइंस में, मेडिकल एजुकेशन में एक सब्जेक्ट हमारे पास ऐसा भी होनी चाहिए कि लोग बीमारी में पड़े लोगों की हम काउंसलिंग करें। सामान्यतः देखा गया
विभिन्न वक्ताओं ने भी चर्चा की, आयुष विभाग अलग है। जब हम किसी आधुनिक चिकित्सक के पास जाते हैं, आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था के तहत इलाज लेने के लिए, तो उनको चिंता होती मर्ज दूर करना, उसका साइड इफेक्ट क्या होगा, उनसे उनका सरोकार कम होता है। एक मर्ज जब हमें ठीक करने को आते हैं तो दूसरा मर्ज आ जाता है। कभी कभी देखते हैं हमारे जो बुजुर्ग परिजन है वो मल्टीपल फेलियर हो जाता है और अंत में हम निराश हो जाते हैं। तो उन परिस्थितियों से बचने के लिए हमें इस विधा की ओर ध्यान देना चाहिए और हमको एक योगा को भी इससे जोड़ना चाहिए। और सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने जो नौजवान है, जो युवा है, अभी क्या है, ज्यादातर नौजवान जब से ये हमारे पास इंटरनेट आया है, रात को 3 बजे 4 बजे तक 2 बजे तक जगते हैं कि रात में अच्छा नेट चलता है, और सुबह उनकी प्रातःकाल का सूर्य नहीं देखते। वो सुबह उनकी 12 बजे होती है, 2 बजे नाश्ता लेते हैं, 4 बजे 5 बजे लंच लेते हैं, फिर वो 2-4 बजे सोते हैं। जब तक हम सूर्योदय नहीं देखेंगे, जब तक हम सुबह की साफ वायु नहीं लेंगे, जब तक हम रोज एक्सरसाइज नहीं लेंगे। आप उदाहरण के लिए सोच सकते हैं, जैसे कोई नई मशीन हम खरीद करके लाए, भले ही कितने लाख की करोड़ की हो, आपकी मशीन 12-13 करोड़ की आती है, जो सीटी स्कैन या एमआरआई मशीन आती है, आप उसको छोड़ दीजिए 10 साल के लिए, कोई मशीन का पार्ट मत चलाइए, वो मशीन पूरी तरह से कोलैप्स कर जाएगी। 10 साल के बाद उसमें कुछ बचेगा नहीं, जहां तक मैं समझता हूं। हम मानव शरीर अमूल्य है, इसका कोई कीमत नहीं है। तो हम बच्चे हैं तब तक तो आप सोचिए, उदाहरण के लिए हमने कहीं पढ़ा था, एक बच्चा जो 5 साल का है, जितनी उछल कूद करता है, उसका वीडियो बनाकर किसी हम सुमो पहलवान को दे दें कि ऐसा करके दिखाओ, वो नहीं कर सकता है। तो हमारी एनर्जी जो है, हमारी जो शरीर की गति है, हमारे अंदर जो पार्ट्स हैं, हमारे अंदर जो बोन्स हैं, अगर उनको मूवमेंट आवश्यक है, हम नहीं देंगे तो जाहिर तौर पर वो कहीं न कहीं पर उनमें जाम जैसी स्थिति उत्पन्न होगी। तो हमारे पास एक सब्जेक्ट ऐसा भी होने चाहिए कि अपने शरीर को जो गति ईश्वर ने हमें दी है, उसको जब तक हमारी जिंदगी है तब तक हम उसे बरकरार रखें, योग भी करें। और दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है कि हम दिनचर्या का पालन करें। दिनचर्या है ही नहीं कुछ, सब कुछ अस्त पड़ा हुआ है, घर कहीं पड़ा हुआ है, अपने कहीं पड़े, कुछ भी खा ले रहे। एक हमने गांव में हम गए, तो वो शाम को हम गए तो सभी लोग वहां ड्रिंक किए, लोगों ने मना किया, हम मत जाएंगे। सुदूर नेपाल की तराई में वो गांव था। हम स्टेडियम के उद्घाटन के लिए गए थे और कार्यक्रम करते करते समय 7 बज गया। लोगों ने कहा कि अंधेरा हो गया है, वहां जाना ठीक नहीं, पूरा गांव इस समय बात करने की स्थिति में नहीं, मैं जाऊंगा। हम गए वहां, तो हमने लोगों से पूछा, वहां के प्रधान जी से, कि आप 80,000 की मोटरसाइकिल लाते हो, 80,000 की मोटरसाइकिल ला करके क्या उसमें मिट्टी तेल का भर के यूज करके आप चला सकते हो? स्टार्ट तो हो जाएगी, चलेगी भी? मैंने पागल है क्या? आप तो पढ़े लिखे हैं, उसको हम चलाएंगे 2 महीने में इंजन बैठ जाएगा। मैंने उससे पूछा, जो शरीर अमूल्य है, इसमें जो आप पेट्रोल डाल रहे हो, जो खुराक भर रहे हो, वो तो दोबारा रिपेयर भी नहीं हो सकती, इंजन चेंज नहीं हो सकता इसका। तो हमको अपने खान पान पर भी ध्यान देना होगा। जो हम राशन लेते हैं, जो हम भोजन लेते हैं, जो शरीर के लिए अनुमन्य, वही तो आप लेंगे, कुछ भी खा लेंगे। तो इसके लिए हमको एक काउंसलिंग या पीरियड बच्चों को भी बताना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने, जो हमारे बच्चे हैं जो मेडिकल कॉलेज में तैयार होते हैं, मेडिकल इमरजेंसी में जो हमारे पास इंस्टीट्यूट के हमारे 3 दिन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ, लोहिया, बीजीआई एंड केजीएमसी, और आपके पास तो पूरे स्टेट की मेडिकल की व्यवस्था है। हमारे पास अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के वीसी साहब है। हमारे पास जो टर्सरी केयर की व्यवस्था है, टर्सरी केयर में हम अपने डॉक्टर्स को इस बात के लिए तो तैयार करते हैं कि यदि कोई गंभीर रोग है तो उसको चेक करेंगे, देखेंगे, उनकी चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। लेकिन अगर कोरोना जैसी कोई महामारी आ जाएगी तो आप क्या करेंगे? तो हमारे पास प्राइमरी जो हेल्थ है उसके लिए चिंता ही नहीं। तो मेरा सुझाव यह है कि इस सब्जेक्ट को, इस टर्सरी केयर के साथ साथ हमें चिकित्सकों को, अपने बच्चों को इस बात के लिए भी मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए कि हमारे लिए लोगों को स्वस्थ करना है। तो हम गांव में जाकर के लोगों की चिंता करें, लोगों को कैसे हम बेहतर बना सकते हैं, और यदि आवश्यकता पड़े तो हम छोटे मरीज को भी देखें। इस प्रकार का भी हमें मन में एक मनोस्थिति बना करके आगे चलना होगा। मुझे लगता है कि इस संगोष्ठी के माध्यम से, मंथन के माध्यम से जरूर कुछ रिजल्ट आएंगे, और जो भी परिणाम आएंगे हम अपनी गवर्नमेंट के फंक्शनिंग में उसको परिवर्तन करेंगे, चेंज करेंगे। जो हमारे नए बच्चे हैं, जैसे अभी चर्चा की कुलदीप जी ने कि मध्य प्रदेश ने चिंता की कि हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई हो, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने दिशा में कदम उठाया है, कुछ पुस्तकें हमारे पास उपलब्ध है। लेकिन वही बात आती है कि धीरे धीरे लोगों का मन स्थिति बदलने को जल्दी तैयार नहीं। तो हम इस दिशा में काम कर रहे हैं कि मातृभाषा में लोगों की पढ़ाई हो, और जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है इसमें ये विशेष रूप से दर्ज है
कि हम अपने बच्चों को, जो आने वाली हमारी पौध है, उसको हम उसकी मातृभाषा में शिक्षा देंगे। ये हमारी मजबूरी है, हमारी आवश्यकता है, इसको धीरे धीरे लागू करेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि इस दिशा में सफल हो पाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़े लंबे अरसे के बाद, मैं कह सकता हूं कि आजादी कितने के वर्षों के बाद, हमारी शिक्षा नीति पर कोई काम नहीं हुआ। लगातार हम पुरानी शिक्षा नीति को ही ढोए चले जा रहे थे। आधुनिक परिवेश में रोजगारोन्मुखी किस ढंग से शिक्षा दे सकते हैं, तो उस दिशा में भी बहुत परिवर्तन आया। अपने विस्तृत रूप से अपने विचार व्यक्त किए हैं, मैं आपको बधाइयां देता हूं। अच्छा प्रेजेंटेशन था आपका। केवल एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हम सब चिकित्सक भाई बहन हैं, मिलजुल करके काम करते हैं। हम लोगों को अपने आप को, जो बच्चों को इस बात के लिए तैयार करना होगा कि जो हमने शपथ ली मानवता की सेवा करनी। प्रोफेशन सभी हैं, सब में हम अपने बच्चों को पालने के लिए, समाज को देखने के लिए काम करते हैं, लेकिन जो चिकित्सक का पेशा है, ये केवल प्रोफेशन नहीं, ये सेवा भाव के लिए आपको काम मिला, ईश्वर ने आपको काम दिया है। तो हमको प्राथमिकता देना चाहिए कि हम सेवा के लिए आए हैं, हमारे लिए पैसा या पारिश्रमिक प्राथमिकता नहीं है, और हर स्थिति में मरीज को हम संतुष्ट करेंगे। जो सामने वाला परिजन है, जो मरीज है, उसको नाराज हो सकता है, वो पीड़ा में है, और पीड़ित व्यक्ति को हम पीड़ा दें, ये कहीं से भी हमारे सामाजिक संस्कारों में नहीं लिखा है। तो हमको नए बच्चों को, जो स्टूडेंट्स को, इस बात के लिए भी काउंसलिंग करके तैयार होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि प्रोफेशनल बोर्ड भी होता है, उसका दायित्व है कि अपने मेडिकल कॉलेज में, अपनी यूनिवर्सिटी में अनुशासन बनाए रखना। तो एक सब्जेक्ट ऐसा भी होना चाहिए, चाहे छात्रावास स्तर पर हो, हॉस्टल स्तर पर हो, या कहीं भी हो, कि हम सब बच्चों को इस बात के लिए मन से, मस्तिष्क से तैयार करें कि हमारे परिसर में जो कोई आएगा मरीज पीड़ित, उसको प्रसन्न करके भेजेंगे, और यही हमारा जीवन का ध्येय होना चाहिए। आपने मुझे अवसर दिया, इस कार्यक्रम में आप सब आए, हमारे सभी इंस्टीट्यूट के लोग आए, आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। एक मिनट कुछ कहना है। माननीय मंत्री जी, सादर नमस्कार। मैं कुलपति आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर से हूँ, प्रोफेसर डॉक्टर के सिंह। सभी ने इंटीग्रेशन का जिक्र किया और मुझे ही भूल गए। समझ आता हूँ, करके नहीं दिया, हमारी मजबूरी से दिया। तो मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि आयुष से रिलेटेड कोई भी जानकारी, चाहे न्यूट्रास्यूटिकल से हो, चाहे न्यूट्रिशन से हो, या डायटिक्स से हो, आप लोग सर मुझे आप लोग पूछ सकते हैं, या लेटर भेज सकते हैं, या ईमेल कर सकते हैं। मैं भरसक प्रयास करूंगा कि आपकी जिज्ञासा का उत्तर दूं। धन्यवाद। Education Minister, Dr. British Patel, we are grateful for your presence, sir. Thank you, sir, for a valuable and informative session concerning details